से आपको पता चलेगा कि ये सब करने के पीछे जस्ट अ सेक यस इस सब एक्टिविटी में आप देखोगे कि मैथ्स है, तो हमें मैथ्स से डरना नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें जो मैथ्स जो छिपा हुआ है, आप उसे अगर जान लोगे, तो बहुत अच्छी तरीके से आप उसे समझ पाओगे, उस फिनोमिनन को आप समझ पाओगे। आज हम लोगों के साथ है प्रेरित मिश्रा सर। मैं उनकी फिर से पहचान करा देती हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेरित मिश्रा सर का काफ़ी सालों से उन्होंने शिप पर मर्चेंट शिप पर उनका उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और ये सर 4 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है उनका MIT दैट इज़ मैनेट महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पुणे, जो कि MIT की एक ब्रांच है। तो सर ने लास्ट टाइम जैसे राइटली पॉइंट आउट किया था कि टाइट्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, और ये टाइट्स जो है ये शिप्स के लिए कैसे उपयोगी होते हैं और कैसे उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, यस, तो हाउ दे फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बारे में थोड़ा सा सर ने लास्ट टाइम हम लोगों को बोला था। सो ओवर टू यू प्रेरित सर। इस बार हम लोग जो बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, हरियाणा के स्कूल्स में से कुछ हमें क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आंसर करेंगे। Thank you very much, ma'am. Morning, everybody. So, good morning. Can you hear me? Yeah, just mute yourself. So, ये बेसिक आउटलाइन करेंगे टाइट्स का, जैसे ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं अभी रफ थियरी, तो फिर से थोड़ा बहुत फिर से रिपीट करेंगे उसको, और फिर जो क्वेश्चन पूछे गए पिछले टाइम उसके एफएक्यू देंगे। तो टाइट्स क्या है? टाइड्स इज बेसिकली जस्ट राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स। उसका कारण क्या है? वो है ग्रेविटेशनल पुल। किसका ग्रेविटेशनल पुल? मेनली मून और सन। तो मून ऑब्वियसली ज्यादा करीब है, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये बेसिकली ये जो है अपना अर्थ, ये फिक्स्ड है नेचुरली। ये जो ग्रे है दिखा रहा है, ये वो वाटर है। तो आप देख सकते हो ये मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है ये वाटर को खींचता है। ये मेन कारण है टाइड्स का। तो आप समझ सकते हो जब मून और सन लाइन में है तो दोनों का ग्रेविटेशनल पुल कंबाइंड हो जाता है। जब मून यहाँ पे है, सन राइट एंगल पे, थोड़ा एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो जब दोनों अलाइनमेंट पे है, सन मून और अर्थ, तो उसको स्प्रिंग टाइड करते हैं। जब ये 90 डिग्रीज पर है उसको नीप टाइड। तो लास्ट टाइम भी देखा था हमने, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टाइड्स को। मेनली जो है ज्योग्राफी एंड शेप ऑफ द कोस्टलाइन। जो पोर्ट्स जो है जो एकदम ओशन के किनारे पे है, वहाँ जो टाइडल रेंज है थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट वो ओशन से कनेक्टेड है, और ओशन में ज्यादा इतना टाइट नहीं रहता। ज्यादा जो टाइट रहेगा वो मैक्सिमम रिवर्स में जो है, क्योंकि टाइम लगता है पानी को अंदर जाने को, पानी बाहर आने को, तो जो बिल्डअप है और निकलता है वहाँ मैक्सिमम टाइट आप मिलते हैं, बेस में, रिवर्स में। बेसिकली दो टाइप के टाइट होते हैं, डायर्नल और सेमी डायर्नल। डायर्नल मीनिंग ट्वाइस अ डे, 2 टाइम्स। सेमी डायर्नल ये नॉर्मल है, ये एवरी 6 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। तो 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब समझो ये पोजीशन में है और आप रोटेट कर रहे हो तो एवरी 6 आवर्स हाई टाइड, हाई वाटर, लो वाटर, हाई वाटर, लो, अप्रोक्सीमेटली एवरी 6 आवर्स। तो प्रैक्टिकली जो टाइडल कैलकुलेशन करते हैं हम लोग जहाज पे, हम लोग को क्विक रेफरेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते मैथमेटिक्स में। हम लोग को अप्रोक्सीमेटली एंड रीजनेबली एक्यूरेट टाइड चाहिए होता, तो वी यूज टाइड टेबल्स। ये टाइड टेबल जो है हार्ड कॉपी में भी आते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी आते हैं, आजकल ऑनलाइन भी आ जाता है टाइडल टेबल्स, तो बड़ी जल्दी हम लोग बुकअप कर सकते हैं उसको। तो बेसिकली जस्ट रफली देखते हैं हाउ टू यूज टाइड टेबल्स। तो टाइड टेबल्स में क्या होता है, इतने हजारों पोर्ट्स हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड पोर्ट्स एंड सेकेंडरी पोर्ट्स। स्टैंडर्ड पोर्ट्स ये ज्यादा मेन पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है और मेनली शिप्स आ जाते हैं। तो उनके हर स्टैंडर्ड पोर्ट के लिए एवरी डे के लिए हाई वाटर, लो वाटर, हाई वाटर, लो वाटर, हर साल के लिए टेबल होता है।
टाइडल टेबल्स। अगर सेकेंडरी पोर्ट हो जो स्टैंडर्ड पोर्ट नहीं है तो और करेक्शंस डालने पड़ते हैं स्टैंडर्ड पोर्ट के डेटा से। तो समझो एक स्टैंडर्ड पोर्ट है मुंबई, तो उसके इर्द गिर्द काफी 20-30 सेकेंडरी पोर्ट्स हो सकते हैं। तो अगर मुंबई जाना, हम सिर्फ मुंबई का डेटा निकालेंगे और वहां से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं टाइम एंड हाइट ऑफ टाइड्स। सेकेंडरी पोर्ट्स के लिए कुछ और करेक्शंस करने पड़ते हैं, वो अभी काफी डिटेल में वहां जाने की जरूरत है। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल है कैसे दिखता है। तो अगर समझो आज समझ लो 5th है, तो ये ऑनलाइन से निकाला मैंने, ऑनलाइन टाइड टेब और काफी फ्री वेबसाइट्स है। तो ये लो जो है मुंबई का 605 समझो मार्च 5th को है, एंड हाइट ऑफ टाइड इज 0.5 meters। हाई मतलब हाई वाटर 1 o'clock approximately, height of tide 4.7, low water 7 or 2 and height of tide 1. तो अगले दिन फिर से 12:30 for 8, तो approximately every 6 hours ये cycle low water high water low water। ये जो टाइम है ये इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, approximately 6 hours आप देख सकते हो। और ये जो है डिफरेंस ऑफ टाइड, ये रेंज ऑफ टाइड, डिफरेंस इन हाइट ऑफ टाइड इज रेंज ऑफ टाइड, ये जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइड। तो ये तो मेन चीज है जिसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो अगर आप समझ सकते हो मंडे 5th को हम जाए डायरेक्टली 1 o'clock जा रहे हैं मुंबई में, तो डायरेक्टली हमको पता है अभी 4.8 मीटर होगा टाइड। लेकिन अब अगर समझो 20 पे जा रहे हैं, कभी अबाउट 10 o'clock 10 AM, तो क्या होगा हाइट ऑफ टाइड। तो उसके लिए हम लोग एक कर्व्स यूज करते हैं। तो ये जो कर्व्स है टाइडल कर्व्स, ये कोसाइन कर्व्स है। कोसाइन क्योंकि वो टाइटल जो अप्रोक्सीमेट करता है, कोसाइन कर्व अप्रोक्सीमेट करता है, डायरेक्ट इंटरपोलेशन नहीं कर सकते। तो बेसिकली 2 टाइप के टाइडल जो कर्व्स मिलते हैं, एक इज फॉर जनरल ऑल द वर्ल्ड, एक दूसरा जो है ब्रिटिश एंड यूरोपियन वाटर्स, क्योंकि वहां जो है टाइडल रेंज बहुत ज्यादा है, तो वहां अज्यूम नहीं कर सकते कि कोसाइन कर्व। तो ये यूज करते हैं नॉर्मली, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड कोसाइन कर्व है, आप देख सकते हो। ये इंटरपोलेट करने के लिए कि बिटवीन लो वाटर एंड हाई वाटर क्या हाइट ऑफ टाइड। तो ये जो बॉटम ये जो एक्सिस, ये लो वाटर है, ऊपर का ये हाई वाटर है, ये कर्व, ये टाइड कर्व। तो ये जो है कोसाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन इंटरपोलेशन नहीं करते। तो अगर इसको यूज करना है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो लो वाटर हाइट 0.5 मीटर, हम लोग को समझो 10 बजे टाइम का हाइट ऑफ टाइड चाहिए 10 o'clock। ये लो वाटर का रेंज है 0.15, हाई वाटर 4.8। तो यहाँ पे आप मार्क कर दो, ये एक्सिस पे, ये स्केल पे 0.15, यहाँ पे 4.8 और एक लाइन में, ये लाइन कनेक्ट करें। तो जैसे मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन इंटरपोलेशन नहीं है, नहीं तो आप डायरेक्टली इस पे कर सकते थे 10 o'clock का, हम लोग को ये कर्व्स यूज करते हैं। तो ये कर्व्स नॉर्मली 3 कर्व्स रहते हैं, ये 6 hour कर्व्स। तो यहाँ पे लिखा गया है ये एट एकदम हाई वाटर है, ये जो है 1 hour बिफोर, 2 hour बिफोर, 3 hour बिफोर, 4 hours बिफोर, 5 hours बिफोर, ये जो वाई एक्सिस। ये जो कर्व्स है ये अपना ड्यूरेशन ऑफ टाइड। तो अगर ये 5 hour कर्व है, 6 hour कर्व है, 7 hour कर्व, नॉर्मली 3 कर्व करते हैं। तो इस पे जितना ड्यूरेशन ऑफ टाइड है वो पर्टिकुलर कर्व हम यूज करते हैं। तो अपना ड्यूरेशन ऑफ टाइड इज अबाउट 5 hours, 6 to 13, 7 hours है, 7 hours है ड्यूरेशन ऑफ टाइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये कर्व यूज करें। नॉर्मली एक 5 hour का कर्व रहता है यहाँ पे, 5 hour, 6 hour, 7। तो क्या करते हैं फिर, हम लोग को 10 o'clock का टाइम चाहिए। तो अपना हाई वाटर की जो सेंटर का लाइन है, हाई वाटर इज एट 1 PM 39। तो ये 1 PM हो गया, ये 12 PM हो गया, ये 11 हो गया, 11 AM, ये 10 हो गया। तो 10 o'clock का जो टाइम है, ये वाई एक्सिस पे अब जाते हैं हम लोग। ये 7 hours का ड्यूरेशन ऑफ टाइड है, तो 7 hours पे हम लोग फिर यहाँ पे लेफ्ट जाएंगे जहाँ कट होता है, फिर ऊपर जाके डायरेक्ट रीड ऑफ कर देंगे जो हाइट ऑफ टाइड। तो ये बड़ी सिंपल तरीके से 2 मिनट मिल जाता है हाइट ऑफ टाइड फॉर टाइम रिक्वायर्ड। ये जो है दूसरा टाइप का कर्व है, ये
इंग्लिश वाटर में है, यूरोपियन वाटर में, क्योंकि ये जो दिख रहा है आप, ये प्योर कोसाइन कर्व नहीं है, बहुत रीच ऑफ टाइड होता है। बेसिक फंडामेंटल वही है, लेकिन हम लोग ये स्प्रिंग कर्व होता है और नीप कर्व होता है, तो इंस्टेड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइड कर्व स्प्रिंग कर्व यूज करते हैं और नीप कर्व यूज करते हैं। तो सिमिलर लो वाटर हाई वाटर कनेक्ट कर लो, जो टाइम चाहिए आपको डिपेंडिंग स्प्रिंग टाइड है या नीप टाइड है, वो कर्व पे जाके यहाँ से इंटरप्रेट कर। तो ये बड़ा डायरेक्ट सिंपल तरीका है, तो 2 मिनट में वो हाइट ऑफ टाइड मिल जाता है। तो बेसिकली ये टाइड की क्या जरूरत है, क्योंकि वो शिप का ड्राफ्ट रहता है। ड्राफ्ट मतलब फ्रॉम द वाटर लाइन टू द बॉटम ऑफ द शिप, तो उसके नीचे कितना पानी है उसके हिसाब से हम लोग नेविगेट कर सकते हैं कि शिप को बॉटम टच नहीं करना चाहिए। तो जितना हाइट ऑफ टाइड है उसको ऐड करते हैं फ्रॉम द चार्ट डेटा। तो चार्ट अपना नेविगेशन चार्ट पे जो डेप्थ होता है वो चार्ट डेटा का मतलब बेसिक लेवल समझते, उसके ऊपर इतना हाइट ऑफ टाइड, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी सेफ है जाना या नहीं सेफ जाना, कितना हाइट ऑफ टाइड की जरूरत होगी जब हम लोग सेफ जा सकते हैं पोर्ट में वगैरह। तो ये मेन यूज है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और बाकी जो एक्चुअली मेजर कैसे करते थे डेप्थ ऑफ वाटर को आउट एट सी, बेसिकली 2 तरीके। एक तो ये जो साउंडिंग्स ऑफ सी बेड, ये बहुत पुराने जमाने में ऐसा रोप लेके लेड करके लेके एक्चुअली पानी में डालते थे और उसको हाइट जितना है रोप वेट हो जाता था, वो ऑब्वियसली वो जमाना गया अभी। तो नॉर्मली आजकल एको साउंड यूज करते हैं। एको साउंड का प्रिंसिपल सिंपल है, साउंड वेव भेज दो नीचे फ्रॉम द बॉटम द हल, कितना टाइम लगता है रिफ्लेक्ट होने का, वापस रिफ्लेक्शन आ जाता है, उतना कैलकुलेट कर दो बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ साउंड एट सी। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसके ऑब्वियसली लिमिटेशंस है, फॉल्स एकोज वगैरह, और जैसे आप समझ सकते हो ये एको सीधा डाउन जाता है, सबमरीन में एको आगे की ओर जाता है, तो आगे भी पता चलता है आपको क्या हो। एको साउंड में स्ट्रेट एको डाउन जाता है, वापस अप जाता है। तो हम लोग को पता है कि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम डेप्थ ऑफ वाटर क्या है, लेकिन जहाँ तो मूव कर रहा है आगे की ओर मूव कर रहा है, तो ये जो रीडिंग है थोड़ा पुराना रीडिंग है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि आगे भी काफी उतना ही है, श्योरली नहीं बोल सकते। तो ये चार्ट पे दिखाते हैं डेप्थ क्या है, चार्ट पे ये साउंडिंग कि यहाँ कितना डेप्थ है, यहाँ कितना डेप्थ है। तो जितने ज्यादा साउंडिंग है उतना अच्छा सर्वे किया हुआ है वो एरिया के, तो हम लोग रिलायबल मानते हैं वो चार्ट को। जहाँ कम है मतलब वहाँ सर्वे नहीं है, तो हम लोग को बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि ये डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ जो है शायद आगे जाके नहीं हो सकता। तो ये बेसिक ओवरव्यू है। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये एडिशनल जो क्वेश्चंस है वी जस्ट गो थ्रू, एंड अगर इसके बाद ओवर एंड अबव कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो बाय ऑल मींस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आर देयर ऑलवेज 2 हाइट ऑफ टाइड्स अ डे अराउंड यूके? 99% 2 रहते हैं, 2 हाई वाटर 2 लो वाटर। अगर कोई कोई एरिया में बहुत ऑड कंडीशन है या बहुत लंबा रिवर वगैरह है तो फिर ये चेंज हो जाता है, लेकिन ज्यादातर देयर आर 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स। Why the tide is not the same in the entire coastal region? जैसे मैंने कहा ये बहुत डिपेंड करता है टोपोग्राफी पे। जो नियर कोस्ट लाइन है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा अराउंड द कोस्ट लाइन। जैसे रिवर स्टार्ट होगा, बे स्टार्ट होगा, क्योंकि पानी जब अंदर जाता है बाहर जाता है तो पूरा चेंज होता है टाइड डायरेक्शन, और बहुत ज्यादा भी होता है। Where are the highest tides in the world? ये as per the record ये बे ऑफ फंडी में है, 16 मीटर्स टाइड है, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इंडिया में भी गल्फ ऑफ कम्बर्ट ये गुजरात में है और कांडला में बहुत कुछ हाइट ऑफ टाइड है, और ये हाइट ऑफ टाइड के कारण क्या होता है, करंट भी बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे नेविगेशन काफी कठिन होता है। हाउ कैन टाइड टेबल्स बी प्रोड्यूस सो एक्यूरेट? ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स एंड मेन जो है हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस, एटलीस्ट 1 ईयर। तो अभी समझो मुंबई में पता है हम लोगों को इतने सालों का डेटा है, तो अगर ज्यादा वेदर चेंजेस नहीं हुआ तो पता है कि मोर और लेस उतना ही रेंज में आएगा कमिंग टाइम्स। तो यूजुअली मेन है historical data, and on top of that some mathematical model. How are tides related to storms? ये again बहुत ही complicated subject है। ज्यादातर storm surges ये main जो impact है, कि storm surge मतलब अगर storm आए, हवा बहुत देर के लिए चल रहा है एक डायरेक्शन में, तो ऊपर से वाटर बिल्डअप हो जाता है एक तरीके से। जहाँ विंड यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से वाटर बिल्डअप हो, तो यहाँ टाइड ज्यादा होगा। यहाँ से आ रहा है विंड, वहाँ कम टाइट हो जाता है, तो इसको स्टॉर्म सर्ज कहते हैं, जब ये विंड एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा। और ऑफ कोर्स टेम्पररी इफेक्ट्स हो सकता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। डू टाइड्स अफेक्ट फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन द रीजन? यस बिल्कुल,
क्योंकि आप समझ सकते हो जो हाई वाटर लो वाटर है वो ड्राइंग एरिया है, तो हाई वाटर जब आएगा वो पूरा सबमर्ज हो जाएगा, लो वाटर पे पूरा फिर से इमर्ज हो जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, तो बहुत भारी इम्पैक्ट है। और ऑल्सो टाइड मतलब होता क्या है, क्योंकि वाटर इज गोइंग इन एंड आउट, तो वो करंट के साथ भी बहुत सेडिमेंट वगैरह, बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। और आजकल एक फॉर इन्फॉर्मेशन बैलेस्ट वाटर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये रेगुलेशन निकले हैं, क्योंकि समझो आप मुंबई में बैलेस्ट वाटर शिप को स्टेबल करने के लिए तो टैंक्स में बैलेस्ट वाटर डालते हैं, और वो पानी जो है यहाँ पे फ्लोरा और फौना यहाँ लेके आप समझो अमेरिका जाओ और ये पानी है बैक्टीरिया वगैरह वो अमेरिका में इसको डिस्चार्ज करो, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है उनके इकोसिस्टम में। तो आजकल बहुत रेगुलेशंस स्टार्ट किए हुए इसके रिगार्डिंग दिस, इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, ये बैक्टीरिया कैसे मारना है वगैरह, बहुत इक्विपमेंट्स है इसके बारे में, पूरा ऐसा एक रेगुलेशन। Is there seasonal variation in the tidal range of the Earth? Yes, there is seasonal variation. वो आप समझ सकते हो मून एंड सन के ऊपर है, तो जैसा वो पेरिजी अपोजी मून का भी स्टडी नहीं है, एज हो जाता है थोड़ा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ वेरी करता है, तो सीजनल वेरिएशन आ ही जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टाइड्स इन अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। अभी एग्जैक्टली व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुनामी, क्या कितने ड्यूरेशन का है वगैरह वगैरह, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। ये हम लोग वैसे कोई ध्यान नहीं देते, हम लोग सिर्फ इतना ध्यान देते कि अगर बहुत बड़ा स्टॉर्म हो तो हम समझते हैं कि वहाँ की जो टाइड्स की जो प्रेडिक्शन है वहाँ चेंज हो सकते हैं। जो जो टाइड टेबल्स यूज कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरली एक्यूरेट जब हम लोग स्टॉर्म कह रहे हैं। Tides occur in places where there is ice glaciers. Yes, glaciers से कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैसे टाइड्स से, ग्लेशियर्स सिर्फ आइस है, हॉट कपर होगा, तो टाइड्स का फर्क नहीं। What are king tides? King tides basically जो स्प्रिंग टाइड है, जब अलाइनमेंट है वो एकदम एक्स्ट्रा स्प्रिंग टाइड है, when everything is in perfect alignment, जैसे कहा यहाँ पे when the moon is closest to the earth, perigee, जो मून भी रोटेट कर रहा है, तो जब क्लोजेस्ट टू द अर्थ है और स्प्रिंग टाइड है तो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है, उसको हम king tide। Do tides occur in polar regions? Yes, they occur in polar regions because वो जहाँ भी ग्रेविटेशनल पुल है वहाँ पे होता है। ओनली थिंग इज वो एक्चुअली नेविगेशन पे हम लोग करते हैं, पोलर रीजन एक्चुअली जाते नहीं हम लोग क्योंकि वो पूरा आइस है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड जो वेसल्स है वहीं पे जाते हैं। लेकिन टाइड्स occur because they are caused by gravitational pull, so they occur everywhere। In ships, how do they adjust the pathway overseas? ये जो कहते हैं बेसिकली ये रूट प्लानिंग है। ये अगेन पहले हम लोग शिप्स कैप्चर करते थे बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, रूटिंग चार्ट्स वगैरह, हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल करंट्स, हिस्टोरिकल विंड एंड देन विंड फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट लेके रूट प्लानिंग करते थे। आजकल शोर साइड पे भी बहुत मदद है, कंप्यूटर्स, लेटेस्ट मॉडलिंग, तो वहाँ से भी हम लोग को डेटा मिलता है कि आप यहाँ रूट यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ। तो ये अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज हो गया एंड बहुत कंप्यूटर बेस्ड हो गया, तो इसका बहुत असिस्टेंट मिलता है। तो बेसिकली ये है क्वेश्चंस और ये ब्रीफ समरी है टाइड्स का। ऑफकोर्स बहुत ही गहरा टॉपिक है, तो पूछना अगर चाहते हो आप लोग कुछ क्वेश्चंस। Thank you so much, sir. Sir, few more questions, rather which are coming in my mind. We have talked about the seasonal variation in the tides. हम लोगों ने सीजन जैसे चेंज होता है वैसे टाइडल रेंज चेंज होती है, ऐसे हम लोगों ने अभी देखा है, राइट? सो इंडिया के बारे में आप अगर देखोगे तो कोस्टल रीजन ज्यादा करके हम लोग, हमारा वेस्ट का कोस्टल रीजन अगर पकड़ते हैं तो उसमें कौन से महीने में ज्यादा करके हाई टाइड देखी जाती है, टाइडल रेंज ज्यादा है ऐसे, या किंग टाइड आती है, तो ये कौन से सीजन्स में पॉसिबल है? मैम सीजनल चेंज मतलब इट्स नॉट एज पर सीजन, ये समर विंटर का नहीं है। एवरी मंथ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ वो ग्रेविटेशनल पुल चेंज होता रहेगा, तो ऐसा कोई नहीं कि ये मंथ में ज्यादा होगा ये मंथ में कम रहेगा। एवरी ईयर डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटेशनल पुल वो चेंज होता रहेगा, तो ये एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं कि कौन से मंथ में ज्यादा रहेगा। आई डोंट नो। Because in winter we say that the sun is far away from the earth, but in summer it is quite close to the earth, so that should be I think affecting the gravitational pull.
Yes, ma'am. Affect तो करेगा definitely, but moon has a major effect. तो moon का जो perigee apogee है, that will have a much more effect. Okay, okay. 1 minute, sir. Along with me, there is a student. He wants to ask some questions. Yeah, good. Hello, sir. Hello. Good morning. Morning. Sir, can I ask one question? Yeah, I of have a course. question in mind. Don't ask a complicated question. Ask a Okay. No, not at all. Okay. How do the merchant ships compensate for a big tsunami, which consists of huge high tidal waves in middle of deep sea points like Mariana Trench, and which might be considered as a deepest point in the world? Okay. See, basically, a tsunami is a huge amount of energy is released. So when the water is very deep, okay, say Mariana Trench or anywhere open sea, the energy built up of the amplitude will be minimal. So in fact, out at sea, if a tsunami goes, it may be just 1 foot, it will just pass below the ship, it will not. What happens, the tsunami effect is when you come closer to the shore, all that energy is built up because the depth becomes shallow. So the amplitude of the wave becomes very big. So the problem is only near the shore. Out of the open sea, वो पता भी नहीं चलेगा, it will just go below. Okay, sir. Fine. और एक लास्ट क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि हाउ डू दे यूज if they use quantum computing in case of weather predictions in sea weather predictions. This is the last question. Yeah, I don't know what exactly. I don't think quantum computing as yet is commercially viable. I think it's still at the trial stage, but they are using all kinds of computer models, and there are various companies which do that on a commercial basis also. So it's a very complex thing. They have their own software. They're actually selling this to the ship owners that we will give you a better route if you follow us, and ship owners pay for these services. So they use all the parameters, wind and wave, and they say, okay, it's a safer route, faster route, you will save more fuel like this, more safer to go like this. So it's a complex thing. About quantum computing, I doubt whether they use quantum. So I've heard about Suez Canal and the canal between the South African part and Madagascar canal जो होता है. Yeah. इसका क्या Suez Canal का? What have you heard about it? Plan करते हैं. I think I have heard some, but I have very half knowledge, so I ask you. Yeah, no problem. Actually, the planning mostly is for ocean passages. For coastal क्या है वो ज़्यादा we don't have much of a choice. समझो मुंबई से अगर चेन्नई जाना है, we cannot go all over the park. So we have to go more or less direct. But if you have to go cross Pacific, cross Atlantic, then the ocean passages have a lot of meaning because there are a lot of variations to be used. Okay, sir. Thank you. So one more question that we would like to ask. If you talk about the seabed, there is constantly some motion in the seabed. So if there is a strong motion of the seabed, so that causes tsunami or this type of things are caused because of the motion of the seabed. So how these parameters do they affect the tides? Yeah, they will certainly affect the tide. I mean, for a short amount of time, if you have a huge tsunami and the whole seabed is changed itself, they will affect the tides. But again, this is such a complex thing. And how long they will affect the tide, what is the duration, will there be a permanent change in tide? That is, I think it's really, really complex. That is something I cannot really comment on. Beyond my, only the extreme oceanographers, they will have to data again, survey the area and see if there's a change in tide. Temporary, of course, there will be a dramatic change in the tide. Okay. So one more thing. Now there is maths involved in the tides. Yes, in the making of these chart tables or tide tables which you have on the ship, there is maths involved. So this basically the maths which is involved is basically the distances between the earth and the sun and all those things. Yes. Right? Yes, So that is the from basic. these, yeah. Apart from these, that is the distances which are measured between the earth, sun and moon. Yes.
there are many softwares which are made using these parameters. Also, one more thing that we will have to consider is the time of rise of the sun and the moon. These parameters are also equivalently important. So in this case, maths here involved is in measuring the time of the rise of the moon, the time of rise of the sun, the time of set of the sun, and the time of set of the moon. Apart from this, the maths involved is the distances between the earth, moon, and sun. So taking all this into consideration, compiling all this together, there are many softwares which are available in the market which give you information about the tides. Yes. So are these softwares reliable? Ma'am, what we do is we use a standard software for practical purposes. We usually use the Admiralty or another government. For example, various governments, US government has their own tide tables, Indian government has their own tide tables, Admiralty tide tables. So these are the standard and they are reliable. We've been using them for years and years. And also, in addition to just the mathematics, like I said, you need at least 1 year of data minimum. So, and most of the ports we go to, they have years and decades of data. So, unless there's some normal circumstances, some storm or something, it's quite reliable. Sir, in the chat box, we are having 2 questions asked. So could you please elaborate them? Early for your wing, meaning what? Mandar, what does that mean? How early age study of maths useful for your wing? Meanings for my profession, for Navy? Is that what you mean? Mandar sir, would you please elaborate? Yes, sir. Yes, you are right. Early childhood mathematical trainings, how they are important for your that is some person or child want to pursue your profession. How this study would be helpful for them, or how important is for them. Okay, I think mathematics study is a must for everybody. It's not just the actual application of the mathematics, it is how it trains your mind, makes you in a more rational manner you can think, and it applies to every single field you can possibly imagine. Tides and all is just one example. So study of mathematics is a very foundational study and it should form the part of any curriculum whatsoever. And even if you want to do something like commerce or anything, I mean, even not directly maybe technical, but mathematical study is the foundation of it's a foundational discipline. So considering engineering or considering something which is technical, yes, mathematics is important, but then regular courses of engineering or some technical issues are different. But the children are today frightened of mathematics. So we just wanted to elaborate that any and every wing of studies do have mathematics with them, which you answered right now. So I had asked this question that how children can be benefited by mathematics and sea study or something which is related to sea, which is related to nature. That is what I wanted to elaborate before the children. Okay, so firstly, just the basic qualification is a certain amount of marks in PCM, physics, chemistry, mathematics, to even enter Navy profession. So they also realize that you need a kind of bit of a technical mindset. So this is a standard bar. So you're not allowed to enter the Navy if you have a commerce or arts background. So they also realize that certain professionals, you have to have a mathematical background. So that's all I can say. So mental mathematics. I know that your ships and your big machines are well equipped with equipments for calculations and computers for calculations. But then at the time of 11th hour or say SOS type of thing, how mental mathematics is more important and the ability of a person for mental mathematics?
Okay, very good question. In fact, what used to happen is nowadays, like you're saying, there's so much automated and so much tech and everything's data plotting automated. When we learned everything was you have something like, say, for example, in collision avoidance, you have CPA, TCP. So first we had to actually manually plot this on the radars to get a CPA's closest point of approach, TCP time to collision. So these things also, once you have a certain idea of speeds in your head, relative speeds, you have to actually calculate how many minutes to collision. Now everything is automated. So the thing is, you don't have a mental backup if something goes wrong. So you're relying purely on the tech. So the mental, what happens is, if you have an idea of what's happening, you have a sixth sense tells you if something is wrong with the tech, if the GPS input is maybe not quite proper, you have a mental backup that something not right. Otherwise, you're just relying purely on the tech, and you could have a problem if the tech goes wrong. Thank you, sir. Thank you. That was quite elaborative. Ashwin ma'am, over to you. Thank you, sir. I hope all our questions are satisfactorily answered. So thank you so much, sir, for coming on this platform. So would you like to tell something about this platform? Yeah, How did you feel conducting a lecture? I think it's wonderful. Only thing, it's like it's coming an anonymous lecture. I cannot see the faces of the students and all, so I can only see one or two. So it's like I'm talking to a wall. That's the only drawback. But the questions and all are fantastic. And in fact, most of the FAQs I had to research myself because they are outside of our usual practical experience. So tremendous questions, and hope we keep it going. It's very nice. So our platform being in a very primitive stage, we are still working on that technically, so that children, right now there are around 400 schools in Haryana and many schools in Pune region, even or say Maharashtra. The children are there before the screens hearing your lectures, and some will visit afterwards because there are some calamities or some issues in Haryana. So the net connectivity has been blocked for some purpose. So they will be listening to those lectures afterwards. So we have just recorded all that on our part. But we will be soon overcoming these technical issues by developing some more robust platform where you can directly speak with the children and get a feel of delivering the proper lecture. We are in that process only. We apologize for the inconvenient cause, but we will be soon delivering what our aims are. But what we feel is that people like you or the mentors like you, if they feel appropriate to be in a regular connect with our children, right now around 50,000 or 1 lakh plus children on the board. So, and we'll be soon delivering with every child. That is what we hope to. So, you're always welcome to be a mentor and share some intellect input to our children. Okay, that'd be great, sir. And it's not a inconvenience. I was just offering some suggestions because I mean, foreigner I cannot even see foreigner, but I just thought if I see some faces, I can do the direct connection. But anyway, it's a great platform and great initiative. Wonderful. Okay, thank you so much, sir, for the lecture. Very brilliant lecture, and answers to the questions are also very brilliantly answered. Thank you so much, sir. Thank you. Let's meet again in the next month, that is in the month of September, where we will be having where we are going to have some live demo of the high tide. Yeah, so that is in the month of September. So मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि सितंबर में होगा. तब तक के लिए नमस्कार. Thank you.